because आज we are starting a new topic today, which is modifiers and jumbled sentences. ठीक है? So we'll be starting that for today. किसी को कोई सवाल है पिछली किसी का? Okay, चलो let's start for today. कोई सवाल नहीं है किसी का. So our topic for today is modifiers. ठीक है? अच्छा, can anyone tell me what they think or they know कि modifiers होते क्या हैं? Anyone? Mukim is not here today as well. Or Almira is not here as well today. Okay, anyway, moving on. That modify, अच्छा देखो modifier की जब मैं definition पूछूँ ना तो उसके अंदर modify का word ना, yes, extra information. Basically, what are modifiers? Modifiers describe a noun. ठीक है? Describe a noun. ठीक है? For example, अगर मैं बोलती हूँ कि Ali is smart. This is also a modifier. ठीक है? या मैं बोलती हूँ कि this smart student works quickly. तो यहाँ पे दो मॉडिफायर है. एक तो ये स्मार्ट है, टॉकिंग अबाउट हिज एट्रीब्यूट, ठीक है, और एक है क्विकली कि वो काम कैसे कर रहा है, डिस्क्रिप्शन है बेसिकली. दिस इज आल्सो मॉडिफायर. ठीक है, वो तो दीज आर मॉडिफायर. तो जरूरी नहीं होता कि मॉडिफायर जो है ना वो सिर्फ आपका क्या कहते हैं कोई फ्रेजेस के तौर पे इट कैन बी अ वर्ड. बट हम जो आज फोकस करेंगे दैट्स गोइंग टू बी फ्रेजल मॉडिफायर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ कि जैसे यस, इफ आई से टायर्ड out from playing basketball, Hamza decided to take a nap. ठीक है, अब मुझे बताओ इसने मॉडिफाई किया है. Is it the first half of the sentence or is it the second half of the sentence? What is a noun in this sentence? First half. Okay, anyone else? शकील के अलावा कोई और बता सकते हैं? First half. Okay. What is the noun in this sentence? जो main subject है, what is that? Basketball is also a noun. Obviously, nap is also a noun, but main, what is, yes, Hamza is the main subject of the sentence. ठीक है, Hamza is the main subject of the sentence. ठीक है, so what does this part do? This part describes Hamza. अगर मैं सिर्फ बोलती Hamza decides to take a nap, that is completely okay. Lekin if I'm adding I'm adding a modifier, I'm adding a phrase जिसे describe कर रहे हैं about Hamza, about his action, so that is a modifier. ठीक है, this is a definition of a modifier. सही है? This is called an opening modifier. An opening modifier is something is when a modifier is used to start a sentence. Okay, that is an opening modifier. सही है? एक और, this is an example number 1. ठीक है, this is example number 1. एक और example if मैं दूँ तो opening modifier की, तो that would be जैसे blue being her favorite color, she decided to buy a blue dress. ठीक है, so this is also a modifier. Modifier is something
usually जिसके बगैर sentence makes sense still, but the modifier itself does not make sense if उसको हम किसी चीज से attach ना करें, ठीक है? So what is one property of a modifier? It does not exactly. Okay, I think my OneNote crashed. Okay, it's opened again. Let me reshare the screen. Is it visible to everyone? Let me zoom it out. Yeah. Okay. So this is a modifier, okay, and this is the other part of the sentence. So what is the property of a modifier? It does not make sense on its own, okay? It is dependent on the independent part of the sentence. मैं समझाती हूँ what I'm saying. I hope you're noting all of this down, okay? Okay, so basically, this is the independent part of the sentence. Why is it independent? Independent का मतलब होता है वो sentence जो बगैर किसी extra information के या बगैर किसी additions के वो complete है. अगर मैं बोलती हूँ she decided to buy a blue dress, that is complete. अगर मैं ऊपर वाली example में जाऊँ मैं बोलती हूँ Hamza decided to take a nap, that is complete. However, अगर मैं modifier को alone लिखती हूँ tired out from playing basketball, that is not a sentence. अगर मैं बोलती हूँ blue being a favorite color, that is not a sentence. ठीक है? उसके आगे you have to put on an independent part ताकि वो उसको complete कर सके. This was a property of opening sentence. मतलब mostly modifier का होता है, ठीक है? Modifier does not make sense of their own and they have to be attached to an independent part of the sentence. And जो ऊपर जो examples दिए, those are examples of opening modifiers. Okay, so moving on, what is a misplaced modifier? What is a misplaced modifier? A misplaced modifier is which is placed incorrectly, or we can say it is placed incorrectly beside the wrong noun. You have to follow a rule called touch rule. Okay, what is it? Let me insert. Oh, yes. Sorry. Okay. Anyway, सही है. So touch rule क्या होता है? The touch rule is your modifier should always touch the correct noun. ठीक है? मैं example देती हूँ. An example is, जैसे मैंने आपको बोला, example है to get to his house. Jim bite along an old dirt. नहीं, sorry. Wait. Example would be of a misplaced modifier. Jim biked along an old dirt road to get to his house, which cut through the woods. Okay. अब मैं जिससे पूछूं वो मुझे बताएगा कि why do they think कि this is wrong. पहले तो मुझे शलीना, can you tell what is the modifier in this sentence?
The second part, meaning which cut through the words is the modifier, right? Okay. Shabir, can you please tell me what is the noun that the modifier is describing in this sentence? Gym. Okay. You think कि जो modifier है, it's describing gym. So you're saying कि the modifier is describing gym. So gym is cutting through the words. What is the modifier describing? You have to recognize that. Is it describing gym? Do you, all of you agree with that? Road, perfect. It's talking about the road. So the touch rule says that the modifier should always be placed beside the noun. You cannot, देखो इसको पढ़ के ये लग रहा है कि the modifier is used to describe the house, which is not true. It's used to describe road, सही है. Road को describe करने के लिए use हो रहा है, तो that is the wrong placement of a modifier. The correct placement of this modifier would be, देखो correct placement दो तीन हो सकती हैं, but to get to his house, Jim right along an old dirt road, comma, which cut through the woods. Does this make sense to everyone? After road, exactly. ठीक है, इसको एक correct करने का तरीका तो ये है. What could be another way? Another way could be कि मैं ये लिख दूँ, Jim biked along an old dirt road, comma, which cut through the woods, comma, to get to his house. Both are right, as long as the sentence makes sense, as long as the touch rule is not violated, then your modifier is placed correct. ठीक है? So इसका कोई एक correct answer नहीं है. इसको use करने के दो तीन तरीके हैं, as long as these are followed. ठीक है? So that was our concept for misplaced modifier. एक और ले लो, जैसे one more could be, another example could be example number 2 for this heading. While driving to work, while driving to work, a car accident caused a traffic jam on the highway. This is a new concept, by the way. Misplaced modifier, okay, this is a dangling modifier. A dangling modifier is something, a modifier which is used in a sentence without having the subject in the sentence. When I talk about the subject, I mean the verb with the noun जिसको modifier describe कर रहा है. So tell me, what do you guys think कि इसमें कौन सी चीज को जो है ना वो describe कर रहे हैं? This is the modifier. ये तो सबको clear है, right? कि while driving to work is a modifier, but do you guys think कि इसका कोई इस पे कोई noun दिया हुआ है हमें? कोई noun है हमारा इसका? नहीं, कुछ भी noun नहीं दिया हुआ. This is a wrong place modifier. जिसको correct करने के लिए we'll include a noun and we'll say while Jane or anyone was driving to work, and then you include all of this. Without the sentence having a proper subject. ठीक है? Make sense? सबको समझ आ रहा है? Rao Savera, Shiraz, Shalina, Nisha, everyone's getting it? Can you repeat this point? Okay, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है. Okay, I'll repeat this. देखो, dangling modifier होता है
कि a modifier which is used in a sentence without having a subject. जैसे मैं बोलती हूँ या जैसे इसमें लिखा, जैसे let me give you another example. Another example could be कि जैसे sorry, connection issue, no worries, I'm thinking of an example to tell you. Okay, yes, for example, frustrated at the bad laptop, the assignment could not be submitted on time. इसमें Amani, do you think कि what is the modifier? Obviously, the modifier is the first. Laptop, sorry, the first part is the modifier. ठीक है? It is describing what we don't know. Why? Because उस चीज को कहीं भी आपको लग रहा है कि ये जो frustrated at the bad laptop है, assignment में frustrated हो नहीं सकता, time frustrated हो नहीं सकता. तो what is frustrated we don't know. तो इसको correct करने का तरीका ये है कि frustrated at the bad laptop, Amani could not submit the assignment on time. ठीक है? You cannot say frustrated at the bad laptop, the assignment could not be submitted by Amani on time. Why? Because if you use this, if you say frustrated, इसको correct करने के लिए, if you say frustrated at the bad laptop, the assignment could not be submitted by Amani on time. Why can we not say this? Because modifier के बाद हमेशा उसको description, जिसको उसने description दिया वो noun आना चाहिए. But if you use this sentence, इसका मतलब है कि आप assignment को describe करो, which is false. So you have to. This is also the wrong way. So इसमें हालांकि ये है, but this becomes an example of the violation of touch rule, the misplaced modifier. So correct करने के लिए you'll say frustrated at the bad laptop, Amani could not submit the assignment on time. ठीक है? Is it clear now? वारिद आपको समझ आ रहा है? Okay, great. ठीक है, this was our concept for misplaced and dangling modifier. ठीक है, moving on. Our next concept is okay. Our next concept is possessives. ठीक है, what are possessives? बताती हूँ. What are possessives? A little recap for you guys. जैसे Wajid's bag, Shakil's food. Basically, something that is describing the possession of someone. ठीक है, that is what possessives are. ये तो सबको पता है ना. इस पे तो मुझे किसी को elaborate करने की जरूरत नहीं है. This is very straightforward and an old concept. ठीक है, possessives ये होते हैं. Now, modifier में if मैं कहती हूँ unskilled in complex math, Libas score on the exam was poor. No offense, Libas is just an example. ठीक है, exam was poor. ठीक है, अब इधर मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ पर if we say unskilled in complex math, Libas score, हम basically what is happening here, if you try understanding it, तो हम जो ये modifier है हम उसको use कर रहे हैं to describe not Liba but to describe her score. समझ आया सबको? This is what watching out for possessives is. इसको correct करने का तरीका है unskilled in complex math, Liba scored poorly on the exam. Does this make sense to everyone? समझ आया किसको? ऐसा बंदा जिसको अभी तक समझ नहीं आया मैंने क्या बोला है? समझ आया किसी को? ठीक है, great. Okay, example number 2 would be completely engrossed in the
stories plot Savia did not the door open. इसमें क्या मसला है? मिस अगेन बताएं. ओके सवेरा बताती हूँ अगेन. दिस इज द सेकंड एग्जांपल. ये देख लो, ये समझ आ जाए, फिर हम एक्सप्लेन द फर्स्ट वन अगेन. ठीक है. इसमें क्या मसला है? इसमें कोई मसला है? क्या मसला है? राव टेल मी, शकील शबील बताओ. इज देयर एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है इसमें? सॉरी, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? व्हाई इज ओन रिप्लाइंग? अच्छा नहीं लग रहा. अच्छा. एनीवन एल्स विद अ मोर practical explanation? बताओ, what do you guys think is wrong with this? Is there anything wrong with this? Seems right. Story. Okay. Don't you guys think ये story का जो plot है ये possessive है, तो ये गलत place नहीं हुआ? Anyone जिसको ये लग रहा है? Any genius person जिसको लग रहा है कि story's plot है that is not following the touch rule? Abdul Jabbar, don't you think so? Okay. Bhumika, I think this is the first time I've seen your name in class. मैम सही होगा यार. आई गेट दैट यूर कॉन्फिडेंट, बट ये सही होगा नहीं है या नहीं ये बताओ. सही लग रहा है? ओके. इट्स राइट. इट्स राइट. दिस इज अ टेस्ट फॉर यू गाइस. यस, दिस इज राइट. हमेशा गलत नहीं हो सकता बिकॉज हमारा what just happened? पता नहीं क्या हो गया. एनीवे, हमारा जो, हाँ ये सही था. वाई आई थिंक वो चला गया बिकॉज हमारा वो सही था बिकॉज वो स्टोरीज प्लॉट की बात आ रही थी और टच रूल फॉलो हो रहा था. दैट वाज राइट. अच्छा, सवीरा ने मुझे को ऊपर वाली एग्जांपल समझा दे. देखो ऊपर वाली एग्जांपल, इट वाज अबाउट पोजेसिव्स. ठीक है. अनस्किल्ड इन कॉम्प्लेक्स मैथ, लाइबा स्कोर और एग्जाम was स्कोर. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे मॉडिफायर जो है सेंटेंस के हिसाब से लाइबा के स्कोर को डिस्क्राइब कर रहा है. लेकिन लाइबा का स्कोर तो मैथ में अनस्किल नहीं हो सकता ना. या लाइबा अनस्किल होगी, लाइबा का स्कोर तो नहीं हो सकता ना. तो इसलिए दैट इज रॉन्ग. ठीक है. इसलिए that is wrong. Okay, Ahmed, you have joined now, but I'm sorry, I cannot stop the class. I'm doing modifiers. You can watch the recording. ठीक है. लाइबा का स्कोर जो है वो गलत है. ठीक है. सवेरा गॉट इट. चलो, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस. हमारा अब नेक्स्ट थिंग फॉर टू वॉच आउट इज, एक बल्कि लेट्स डू अनदर एग्जांपल ऑफ दिस. ठीक है. वर्जिन विथ 3 pieces of luggage starts search for a baggage part is desperate. Nisha, can you please tell me कि इसमें कोई गड़बड़ है या नहीं? Do you guys find, actually this is a question for everyone, do you guys find any problem in this? It is incorrect. Wow, but how? Sats search. Okay. Chalo, can any of you tell me the correct answer to this?
देखते हैं if you guys understood something या नहीं. जल्दी जल्दी do this and then we're going to do some practice questions for this. साथ searched for a package cart. ठीक है, पूरा सेंटेंस बताओ ना. देखो पहला पैराग्राफ ये तो सही रहेगा. Tell me the second part of the sentence. हाँ, साथ desperately search for a baggage cart या साथ search for a baggage cart desperately. साथ was desperate, that is also correct. देख रहे हो सबके आंसर सही है, everyone is correct. सही है. मैं 3 ऑप्शंस हैं मेरे पास, मैं तीनों को पढ़ के दिखाती हूँ. Burdened with 3 pieces of luggage, Saad was desperate in search for a baggage cart. Perfect. Burdened with 3 pieces of luggage, Saad desperately searched for a baggage cart. Perfect. The burdened with 3 pieces of luggage, Saad searched for a baggage cart desperately. Perfect. तीनों are okay. सही है. ठीक है. Everyone's clear on this. अब moving on. Our next topic is noun modifiers with relative pronouns. ठीक है. अब this is a comparatively longer topic, so इसको जो है we are going to take some time. ठीक है. What are relative pronouns? Relative pronouns क्या होते हैं? Who, whom, which, that, whose, whom, where and when. ठीक है. सही. रिलेटिव प्रोनाउन तो समथिंग जो रिलेट करते हैं. यस निशा, यू राइट. ठीक है. जो जो आपके नाउन की जगह पे बेसिकली जो किसी चीज को रिलेट करे, जैसे मुझे द हाउस दैट बिलोंग टू निशा. ठीक है. तो बेसिकली वी आर लिंकिंग द हाउस टू निशा. ठीक है. अब दीज आर, अच्छा दीज आर ऑल्सो जो मॉडिफायर्स हम रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ यूज करते हैं ना, उनको कहा जाता है रिलेटिव क्लॉजेस. ठीक है. whom और who जो है, they modify people. Never, never, and I repeat, never say which for a person. ठीक है. which can never be used for a person. मैं ये नहीं कह सकती कि बैरक ओबामा which is the president. सही है. ऐसे नहीं कह सकते आप. ठीक है. मैं अगर कहती हूँ कि इमरान खान which is the ex prime minister, आप नहीं कह सकते who होगा. ठीक है. which प्लीज कभी भी यूज नहीं करना. सही है. and that and which जो है ना, वो मोस्टली थिंग्स या एनिमल्स इनको डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है. जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि द साइंटिस्ट दैट मेड द डिस्कवरी वाज रिवॉर्डेड. सेकंड ऑप्शन है द साइंटिस्ट who made the discovery was rewarded. अच्छा, I hope you guys know इसका मतलब होता है copied from above. ठीक है. These are the two options. ठीक है. Which one is correct? Option number 1 or option number 2? I want Fatima to answer this. हालांकि आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं. Fatima, can you please tell me कौन सा correct है? Laiva is saying 1. Laiva 1 क्यों है? Okay, Fatima said 2. Laiva, why do you think it's 1? मैम आई थॉट 2 में which लिखा. चलो it's okay. It's okay. आप लोगों की थिंकिंग बहुत, आप लोगों को लगता बहुत है जल्दी से. Anyway, सही है. तो who is right and that is wrong. ठीक है. कोई confusion तो नहीं है ना? who है, yes it's correct. सही है. ठीक है. who और whom में क्या फर्क होता है? who is, बल्कि let me start the next page. बहुत टाइम हो गया. yes. So who क्या होता है? who is used to as the subject of the verb. ठीक है.
सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ रिलेटिव क्लॉज, मतलब समझाती हूँ इसको। whom जो है ना वो यूज होता है एज द ऑब्जेक्ट और इन प्लेस ऑफ अ प्रीपोजिशन। जैसे 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 इसको इतना गौर करने की जरूरत नहीं, मैं एग्जांपल देती हूँ दो आप लोग को। एक है द सिक्योरिटी गार्ड who we met was nice. The security guard whom we met was nice. इसका क्या आंसर होगा? Which one is right? Who या who? Second. Second. Good. Second one is right. ठीक है. Why is the first one not right? Because हम whom को use करेंगे, हम उसको relate करें, हम उसको basically who is used to describe someone, हम whom use करेंगे उसको relate करने के लिए object in place of a preposition. ठीक है. Moving on. ठीक है. अब जैसे एक और difference है between that and whom. ठीक है. एक सेकेंड. ओके. जैसे अगर देखो अब जब हम क्लॉज की बात करें इसमें मैंने आपको बोला है द मूवी दैट वी वॉच्ड लास्ट फ्राइडे वाज स्केरी. इसमें मॉडिफायर क्या है? द मॉडिफायर इज दैट वी वॉच लास्ट फ्राइडे. ठीक है. However, हमने अभी तक जितनी एग्जांपल्स देखी हैं उन सब में आपका सब्जेक्ट जो था ना वो दैट वाज आउट ऑफ द मॉडिफायर. इसमें सब्जेक्ट जो है वो इन द मॉडिफायर. सो व्हेन द सब्जेक्ट इज इन द मॉडिफायर यू कैन रिमूव दैट. यू कैन से द मूवी वी वॉच लास्ट फ्राइडे वाज स्कैरी. सही है. सो यू कैन डू दैट. सही है. अब जैसे मूविंग ऑन. अब अब जब हम बात करते हैं अब जब हम बात करते हैं किसी मेटाफोरिकल प्लेस की, जैसे मतलब रिपीट दैट सेंटेंस अगेन. जैसे लिखा हुआ है कि द मूवी दैट यू वॉच लास्ट फ्राइडे वाज स्केरी. तो इसके अंदर जब हमारे पास मॉडिफाइड जो जो नाउन है ना हमारा, जो हम ये क्लॉज है हमारा मॉडिफाइंग क्लॉज, उसके अंदर ही जब हमारा नाउन मौजूद होता है ना, जो हमारा मॉडिफाइड नाउन उसका सब्जेक्ट हो जाता है, तो फिर हम दैट को हटा सकते हैं. हम कह सकते हैं मूवी वॉच लास्ट फ्राइडे वाज स्कैरी. मैं कह सकती हूँ द एग्जाम दैट वी टुक वाज वेरी डिफिकल्ट. द एग्जाम वी टुक वाज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. तो यू कैन से बोथ ऑफ देम आर राइट. दैट यूज करो तो भी ठीक है, ना यूज करो तो भी ठीक है. अब व्हाट इज अ मेटाफोरिकल प्लेस? अ मेटाफोरिकल प्लेस इज, जैसे मैं बोलती हूँ वी had a deal where I cooked and he cleaned. This is not where हम जब use करते हैं where place के लिए होता है. But is this a place? This is not a place. This is a metaphorical place that we're talking about. So when we use a metaphorical place, what you can do is you can replace where with in which. You say that we had a deal in which I cooked and he cleaned. सही है. और when जो है वो can be used for time periods. अच्छा सही है. इज एवरीथिंग क्लियर टू दिस पॉइंट? अजान हो गई. मुझे टेक एन अजान ब्रेक.
दोबारा करते हैं. अच्छा देखो, what metaphoricals are, metaphorical place होती है जो actual में place नहीं होती, but you use where for that. जैसे we had a deal where I cooked and he cleaned. ये actual में तो कोई place नहीं है ना. It's just a metaphorical place in imaginary. Basically a deal जिसमें like जिधर, या you say ना कि हमारी deal हुई थी जिसमें, या जिसमें we say जिसमें, right? What is जिसमें? In which. ठीक है, अगर आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करो तो हमारी डील हुई थी जिसमें आई कुक्ड एंड ही कुक्ड. तो बेसिकली हम इंग्लिश में अक्सर वेयर यूज कर देते हैं गलती से. तो वेयर इज द रॉन्ग वर्ड फॉर मेटाफोरिकल प्लेस, यू यूज इन विच फॉर दैट. सही है. मूविंग ऑन नाउ. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज essential and non-essential modifiers. Let me the new page. The movie that here, that is incorrect. That is not incorrect. It's not incorrect. It's correct, but you can omit it. You can leave it. जरूरी नहीं कि आप उसको use करो. You can type the sentence. You can use a sentence without using that. Voice. क्या voice? Is my voice not clear? Okay. Essential versus non-essential. Thank you, Emma, for the confidence. Okay. Essential versus non-essential क्या होते हैं? Basically, these are modifiers that have to be used. उनके बगैर सेंटेंस में प्रॉब्लम हो जाती है. एंड दीज आर समथिंग यू कैन ओमिट और डिलीट. जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि द मेंशन painted red is owned by Nisha. ठीक है, अगर मैं ये कहती हूँ, ठीक है. सो इसमें what the problem is कि यहाँ पर हमारा painted red is a modifier and it is an essential one. Why? क्योंकि अगर मैं इसको omit कर दूं और मैं कह दूं कि the mention is owned by Nisha, which mention are you talking about? You don't know. So यहाँ पर modifier is essential to highlight कि जो red है वो निशा का है. ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि if I say that mention painted red is non-essential, it is essential. Why? Because देखो, let me tell you something. जब मैं that या this use करती हूँ ना, it means I'm pointing to something, या it means I'm referring to something. उस केस में painted red is not important. But अगर मैं कहती हूँ the mention is owned by Nisha, which mention am I talking about? I don't know. If I say that mention, which is painted red, is owned by Nisha. ठीक है, इसमें I'm that और this का मतलब है I'm pointing towards something, I'm showing someone something. उसमें red, this is not important. Why? Because already I'm showing someone something, I'm directing them to something. जब that या this use हो जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी उस चीज के बगैर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, उस चीज के यहाँ पे भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, द मेंशन इज ओन बाय निशा हो रहा है. बट इफ सिर्फ ये सेंटेंस यूज करो, यू डोंट नो व्हिच मेंशन यू टॉकिंग अबाउट. लेकिन आप बोलते हो कि दैट मेंशन इज ओन बाय निशा, द सेंटेंस इज ओके. व्हाई? बिकॉज दैट पर जिसमें ऑलरेडी यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग, दैट का मतलब किसी को बता रहे हो कि वो वाला मेंशन. सही है. सो उसमें आपको रेड की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू टेल कि रेड था तो वो निशा का है. ठीक है, दिस इज अ नॉन एसेंशियल मॉडिफायर. Is this clear to everyone? That mention, yes, that mention is owned by Nisha. So इसमें भी you don't need to include which is painted red. When we are showing something, then that thing will be essential, right? When we are showing something, then that thing will be essential.
जब आप ऑलरेडी किसी चीज को दैट और दिस से देखो, दिस इज समथिंग कंट्रोवर्शियल, मैं ये नहीं कह रही कि नॉन एसेंशियल का मतलब है कि यू शुड ओमिट इट, इसके बगैर भी सेंटेंस विल मेक सेंस, इसके बगैर भी सेंटेंस विल मेक सेंस, हाउएवर इसके बगैर यू विल नॉट बी क्लियर कि किस मेंशन की बात हुई है, इसके बगैर यू विल बी क्लियर व्हाई, बिकॉज यहाँ पे दैट और दिस यूज हुआ है, इसका मतलब है जो बंदा मेंशन दिखा रहा है वो ऑलरेडी किसी चीज को पॉइंट कर रहा है, या वो कुछ दिखा रहा है, कह रहा है कि ये वाला मेंशन उसका है। जब मैं अगर आपसे बात करूँ और हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में मैं आपको बोलूँ ना ये वाला मेंशन इसका है, आई विल शो यू कि देखो ये पिक्चर है एंड दिस इज हर मेंशन, या आई विल टेक आई से दिस इज हर मेंशन, मैं आपको ऐसे रैंडमली तो नहीं कह सकती दिस इज हर मेंशन, आई एम गोइंग टू पॉइंट टुवर्ड्स समथिंग, आई एम गोइंग टू शो यू अ पिक्चर, आई एम गोइंग टू डायरेक्ट यू टुवर्ड्स समथिंग, सो उस केस में पेंटेड डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको मेंशन दिखा रही हूँ, सही है। अनदर क्या कहते हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल का पॉइंट है which with a comma and without a comma, which with a comma यूज होगा तो मतलब है कि आपका जो मॉडिफायर है ना वो एसेंशियल नहीं है, ठीक है। जब which without a comma होगा तो उसका मतलब है आपका मॉडिफायर एसेंशियल, ठीक है। ये इसमें कुछ भी जैसे मैं बोलती हूँ कि हाँ जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लो कि इफ आई से दिस mention for which I yearn, for which I yearn का मतलब होता है I want it, ठीक है, is owned by these. However, मैं अगर कहती हूँ this mention, comma, for which I yearn, comma, is owned by these. Same sentence, comma का difference है, बोलने में कोई फर्क नहीं है। This is an essential one, इसका मतलब है जो रीडर जो राइटर है वो जब बोल रहा है तो this is an important part for him, रीडर्स को बताना जरूरी है कि आई वांट दिस, लेकिन जब ये कॉमा के साथ आ जाता है तो इसका मतलब है कि दिस बिकम्स अ नॉन एसेंशियल वन, दिस इज एन एसेंशियल वन एंड दिस इज अ नॉन एसेंशियल वन, डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन, सेम सेंटेंस है जस्ट कॉमा का डिफरेंस है, क्लियर है सबको ये। ठीक है, चलो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर फॉर मॉडिफायर, अब व्हाट वी गोइंग टू डू, वी गोइंग टू डू सम एग्जांपल्स, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे हम थोड़ी सी, आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस थोड़े से सवाल, ठीक है, एंड आई वांट टू आस्क द पर्सन एंड they can reply, how can we identify questions, we're doing the questions right now, सही है, कोई खुद नहीं बोलेगा, I'm going to ask them, ठीक है। नंबर वन practice question for today is after being trapped in the cave for over 3 days, the creepy sounds of bats became less bothersome to the campers, ठीक है। सबसे पहले let me find some, आर्यन कैन यू प्लीज टेल मी कि इसमें व्हाट इज द मॉडिफायर, मैंने पंक्चुएशन भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, व्हाट डू यू थिंक इज द मॉडिफायर। आर्यन आर यू देयर, अच्छा he's not there, can anyone else answer कि what do you think is a modifier in this sentence। Abdul Jabbar says the modifier is creepy sounds, yes, I mean the phrase वाला कौन सा है, after से लेकर days तक modifier, perfect, for over 3 days, नहीं, देखो this is an opening modifier, आफ्टर बीइंग ट्रैप्ड इन द केव फॉर 3 days, अगर मैं इसको ओमिट कर दूं, अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर भी सही बन जाएगा, व्हाई, बिकॉज इट विल से द क्रीपी साउंड्स ऑफ बैट्स बिकेम लेस बॉदरसम टू द कैंपर्स, इट विल बी राइट, फिर भी सही होगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। फॉर ओवर फॉरएवर लग रहा
था. अच्छा, सॉरी, माय बैड. सही है. अच्छा, दिस इज द मॉडिफायर आफ्टर बीइंग ट्रैप्ड इन द केव. द कॉमा आ जाएगा. ठीक है. अब इसमें एक और मसला क्या है ये बताओ. इज द सेंटेंस करेक्ट? टच नाउन नहीं, टच नाउन नहीं, टच रूल. टच रूल नहीं. परफेक्ट. टच रूल isn't being followed. जब हम ये पढ़ते हैं आफ्टर बीइंग ट्रैप्ड इन द केव फॉर 3 days द क्रीपी साउंड्स ऑफ बैट्स, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये जो मॉडिफायर है इट्स डिस्क्राइबिंग द क्रीपी साउंड्स ऑफ बैट्स, व्हिच इज रॉन्ग. कौन ट्रैप हुआ था 3 दिन तक? द कैंपर्स. The campers were trapped, तो हम इसको कहेंगे after being trapped in the cave for over 3 days the campers became less bothered, the campers bothered less about the creepy sounds of the bat. Is that okay with everyone? सबको समझ आई? Didn't get it? इसमें टच रूल वायलेट हो रहा था. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट करते हैं. अच्छा, रिपीट ये करना, रिपीट कर देती हूँ. देखो, इसमें दिस वाज द मॉडिफायर वाजिब. ठीक है, दिस वाज द मॉडिफायर एंड टच रूल वायलेट हो रहा था. हम यहाँ पे आफ्टर बीइंग ट्रैप्ड इन द केव फॉर 3 days हम यहाँ पे बात करें अबाउट द कैंपर्स, लेकिन मॉडिफायर के बाद क्रीपी साउंड ऑफ बैट की बात आ रही है, तो कैंपर्स को टच नहीं करना. कैंपर्स यहाँ पर आना चाहिए. इट शुड बी आफ्टर बीइंग ट्रैप्ड इन द केव फॉर 3 days the campers became less bothered about the creepy sounds of the bat. ठीक है, समझ आ गया? Question number 2 is the extravagant man's lifestyle was the result of a recent inheritance that had been um, bequeathed to him by his grandmother. इसमें क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम है? Is there any problem with this? जल्दी जल्दी बताओ, then we move on. Is there any problem with this? नो. ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि अगर सब्जेक्ट खुद ही मॉडिफायर में इंक्लूड हुआ हुआ है, ये मॉडिफायर है, राइट? ये मॉडिफायर है. तो सब्जेक्ट खुद ही जो मॉडिफायर में इंक्लूड हुआ हुआ है, तो उसको यू कैन ओमिट. अगर आप ना करो दैट इज ओके, बट जब आपको एरर के तौर पे काउंट हो सकता है कि यू हैव टू रिमूव दैट, फिर आपका जो सेंटेंस फिर भी सेंस बनेगा, लेकिन दैट को आप रिमूव कर दोगे जब आपको सब्जेक्ट खुद मॉडिफायर में आ जाए. The extravagant man's lifestyle was a result of a recent inheritance bequeathed to him by his grandmother. ठीक है, that had been पूरा रिमूव हो जाएगा. सही है. Moving on to question number 3. Question number 3 is the declaration of independence was मैम आपकी राइटिंग. अच्छा, एक सेकंड रुको, मैं दोबारा सही से लिखती हूँ. The declaration of independence, सही है, was unanimously
approved on July 2nd, which was the formal declaration of the 13 American colonies. ठीक है, इसमें कोई मसला है या नहीं? Is there any problem in this? क्या प्रॉब्लम है? टच रूल नहीं है, ओके। तो लाइबा फिर सही क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली exactly. तो ये है क्या? दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, सही है। दिस इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग व्हाट? दिस इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये उसकी डेफिनेशन है। यस, इंडिपेंडेंस के बाद सेंटेंस आएगा। अगर आप इसको जुलाई 2 के बाद रखते हो तो ऐसा लगता है कि जुलाई 2 को डिस्क्राइब कर रहा है, व्हिच इज नॉट ट्रू। सो इसकी करेक्ट क्या होगा? इसकी करेक्शन ये होगी, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस व्हिच वाज द फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज वाज यूनानिमसली अप्रूव्ड ऑन जुलाई 2। मेक सेंस टू एवरीवन? नॉन एसेंशियल, यस इज अ नॉन एसेंशियल मॉडिफायर देविका, लेकिन जो है ना, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट कि कोई प्लेसमेंट में तो कोई मसला नहीं है मॉडिफायर के। ठीक है, moving on to question number 4. Question number 4 is the troubled teenagers were the prime suspects okay so after this my question to ask in a string of grave robberies देविका आप राइटिंग समझ आ रही है? After being caught on the camera, इसमें क्या मसला है? Is there any problem in this question? Is there any problem in this question? No. Are you sure? Exactly, Devika is right. Why? देखो, if you read the sentence पहली बार आपको कोई मसला नहीं लगेगा. But the troubled teenagers were the prime suspects in a string of grave robberies after being caught after being caught on camera committing. हाँ, after being caught on the camera. सही है. इसमें कोई मसला है या नहीं? देविका says मसला है. Why? देविका says कि after जो sentence है वो teenagers के बाद आना चाहिए. ठीक है, the troubled teenagers after being caught on camera. But surprise, this is right. ठीक है, this was a test. This is right. देविका, you're also right. But this is also right. Because यहाँ पर ये modifier नहीं है. This is a complete flowing sentence. इसमें कोई किसी को modify नहीं कर रहा. ठीक है, अगर देखो, the troubled teenagers after being caught on the camera were the prime suspects in a string of grave robberies. That is also right. लेकिन the troubled teenagers were the prime suspects in a string of grave robberies after being caught on camera. That is also right. Both are right. This sentence has no error. However, अगर आप इसको change करना चाहो तो आप इसको यहाँ पे ला सकते हो. This whole इसको यहाँ पर ला सकते हो. ऑप्शन में कभी भी आपको ये दोनों एक साथ नहीं देंगे कि इसको भी यहाँ पर लाया होगा और बोला होगा कि नो एरर. दोनों कभी नहीं होंगे, एक ही हमेशा से आंसर होगा. सही है? अच्छा, सवेरा से ऊपर वाला समझा दें.
अहमद, ये सवाल मुझे इसका जवाब नहीं पता. The Declaration of Independence was unanimously approved on July 2nd, which was a formal declaration of the 13 American colonies. सवेरा, इसमें मसला ये है कि यहाँ पे कॉमा आ रहा है और जुलाई 2nd के बाद मॉडिफायर आ रहा है, which gives us the impression कि हम जुलाई 2nd को डिस्क्राइब करें. However, जो ये which से लेकर colonies तक sentence है, this is a modifier and this is describing the Declaration of Independence. ये दिस इज अ फॉर्मल डिक्लेरेशन थी, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्क्राइब कर रहा है. दिस शुड कम आफ्टर इंडिपेंडेंस. डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, सो द करेक्ट आंसर विल बी the Declaration of Independence, comma, which was the formal declaration of 13 American colonies, comma, was unanimously approved on July 2nd. ठीक है, सही है. Okay, one more. President Obama. किसमें बोल रही हो देविका? यू टॉकिंग अबाउट थर्ड और फोर्थ? Need an executive. फोर्थ में तो चेंज नहीं होगा ना, कुछ भी चेंज नहीं होगा. इट्स करेक्ट. Order to help immigrant children who the 44th president of US who have come who have illegally entered US. Now अब मुझे बताओ कि इसमें कोई गड़बड़ है या नहीं. फातिमा, can you please answer me? फातिमा, आर्यान, मारवी, निशा, मुअज्जम, लाइबा, दूसरी लाइबा, जाफर, can all of you please answer? Shalina, Soni, Ashna, Amani, Bhumika, please answer. Yes, you're right. The correct answer. इसमें ना एक मसला है जिसकी वजह से पूरा मसला आ रहा है. इसमें दो मॉडिफायर है. एक मॉडिफायर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बारे में है, और एक मॉडिफायर है इलीगली एंटर यूएस. ठीक है, तो इट शुड बी प्रेसिडेंट ओबामा, कॉमा, द 44th president of the US, comma, made an executive order to help immigrant children, comma, who have illegally entered US. या कॉमा नहीं होगा, उसके बाद फिर होगा प्रेसिडेंट ओबामा, comma, the 44th president of US, comma, made an executive order to help immigrant children who have illegally entered the US. सही है? Yes, Laiba Mozim, you're right. सही है? Moving on to question number 6 now. Okay. By dialing the digits that make up a phone number cautiously, Laiba ensured she did not. Laiba ensured that she did not. She dialed the right person. ठीक है. If we shift both modifiers after President Obama, I mean, why would you? Actually, you're saying President Obama, the 44th president of US, who have illegally entered US. तो आप ये कह रही हो President Obama ने illegally US में entry ली हुई है. That is what you're saying. अच्छा, question number 6 का आंसर बताओ कोई. No error. Okay. Anyone else?
नहीं अमानी, सी हम इमिग्रेंट चिल्ड्रन की बात करें तो हम इमिग्रेंट चिल्ड्रन को बोल रहे हैं जो इलीगली यूएस में एंटर हुए हैं, तो वी आर सेइंग प्रेसिडेंट ओबामा the 44th president of the US made an executive order to help immigrant children who have illegally. देखो एक और बात, यहाँ पे have की बात हो रही है, have is plural, ओबामा एक सिंगल बंदा है, ठीक है. 6 is not correct, guys. Read it again. By dialing the digits that make up a phone number cautiously. You are saying कि digits जो है ना वो फोन नंबर को बनाते हैं cautiously. बट हम ये इसमें करेक्ट होगा by dialing the digits cautiously that make up a phone number. हम डिजिट्स को कॉशियसली डायल करते हैं. हम डिजिट से फोन नंबर तो कॉशियसली नहीं बनाते ना, हम केयरफुली डिजिट्स को डायल करते हैं. तो ये देखो कॉशियसली यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पे यहाँ पर आना चाहिए था. बाय कॉशियसली डायलिंग द डिजिट्स दैट मेक अप अ फोन नंबर, लाइबा इंश्योर्ड दैट शी डायल्ड द राइट पर्सन. समझ आया? एक ही बात, इट्स नॉट द सेम थिंग. सी, if I say by dialing the digits that make up a phone number cautiously, देखो it's not कि बिल्कुल सही कौन सा है, it's just कि suitable और more sense कौन सा बन रहा है. By dialing the digits that make up a phone number cautiously, यहाँ पे you're implying कि जो digits है ना they make up a phone number cautiously. It's not about the dialing, it's about the digits that make up a phone number. However, आप dialing की बात कर रहे हो, so you're going to say by cautiously dialing the digits that make up a phone number. समझ आया? Is it clear, Laiba? लाइबा आपको समझ आ गया है? Okay. Okay, moving on to more practice now. The seventh one, while watering her plants, a vase entered Jane's ears. इसमें क्या मसला है? What is the problem in this one? अच्छा रुको, it's रुको, let me erase this stuff. While watering her plants, a bee entered Jane's ears. अब बताओ, what's the problem in this sentence? Okay, guys, I think I'm going to add another one. ठीक है, इसका करेक्ट अभी इज इनकरेक्ट. यस, व्हाई? बिकॉज टच हो रहा है. देखो लाइबा ने इसका एक सॉल्यूशन बताया. लाइबा इज सेइंग व्हाइल जेन वाज वाटरिंग हर प्लांट्स अ बी एंटर्ड हर ears. दैट इज ओके. इसका एक और सॉल्यूशन ये है, व्हाइल वाटरिंग हर प्लांट्स जेन जेन एक्सपीरियंस अ बी एंटरिंग हर ears. बट जो लाइबा ने बोला दैट इज मोर करेक्ट, दैट इज अप्रोप्रिएट कि हम उसको बोलेंगे व्हाइल जेन वाज वाटरिंग हर प्लांट्स. या हम ये कह सकते हैं, या लेट्स से इसको अभी एंटर्ड या अभी स्वॉटेड जेन्स ears. ठीक है, तो इसका हम इसको कहेंगे while watering her plants Jane got swatted by a bee on her ear, या फिर while Jane was watering her plants a bee swatted her ears. दोनों सही होगा. ठीक है. Question number 8 will be the boy could not see the whiteboard sitting in the seat in the back of the classroom. इसमें कोई मसला है या नहीं? क्या मसला है? ये बहुत chaotic नहीं लग रहा सेंटेंस? The boy could not see the whiteboard sitting in the seat in the back of the classroom. बहुत chaotic लग रहा है, right? बहुत wordy लग रहा है. Good. इसको कैसे ठीक कर सकते हैं?
इसमें इसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, अगर मॉडिफाइंग सेंस में आपको बोलना तो आप इसे कहोगे सिटिंग इन द सीट इन द बैक ऑफ द क्लासरूम। अच्छा देखो अहमद, वर्ड ही तो है, लेकिन आप ना वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते इस एक्सरसाइज में, आपको बस प्लेसमेंट को चेंज करना है। So, इसको ठीक करने का तरीका होगा सिटिंग इन द सीट इन द बैक ऑफ द क्लासरूम, कॉमा द बॉय कुड नॉट सी द व्हाइट बोर्ड। इस हिसाब से जो ये है ना, यहाँ ये इज अ मॉडिफायर, ये व्हाइट बोर्ड के बराबर में आ रहा है, व्हिच डज नॉट मेक सेंस। आपको एग्जैक्टली बॉय के बाद मॉडिफायर लगाया जाए, ठीक है। तो द करेक्ट वुड बी, दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सिटिंग इन द सीट इन द बैक ऑफ द क्लासरूम, कॉमा द बॉय कुड नॉट सी द व्हाइट बोर्ड। दिस विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? Question number 9. We're going to do 10 questions and we're going to take your questions then. Journeying in the Atlantic Ocean, the weatherman reported that a hurricane was, ये सही है या गलत है? Wrong. Why wrong? Correct version बताओ मुझे इसका. The weatherman पहले आएगा. ठीक है. So the correct answer will be the weatherman reported that a hurricane, comma, turning in the Atlantic Ocean, yeah, which was turning in the Atlantic Ocean, was coming. Right? सही है? Easy. Question number 10. Angus wore his, okay, मैंने समझाती हूँ दोबारा. Collared shirt to the wedding, which was stained by ketchup. Okay, now I want someone else to answer. Fatima, Aryan, someone from you guys. Laiba Jaffer, Savera, Shalina, Soni, Abdul Jabbar, please answer. जब तक I'm going to explain अहमद ऊपर वाला सवाल में देखो अहमद, the problem is कि turning in the Atlantic Ocean is the modifier, लेकिन that the touch rule is being violated. हमने उसको weatherman से पहले यूज किया हुआ है, तो हम ये कह रहे हैं कि वेदरमैन अटलांटिक ओशन में टर्न करे, which is not right. हम हरिकेन की बात करें तो it should be the weatherman reported that a hurricane, comma, which was turning in the Atlantic Ocean was coming. सही है? शकील और लाइबा ही जवाब दे रहे हैं मुझे. Is there no one else जो जवाब देगा? फातिमा, लाइबा जाफर, अब्दुल जब्बार, आलियान, सोनी, भूमिका. भूमिका, is this your first class? I think it's your first class because मैंने आपका पहले कभी नाम नहीं पढ़ा. Place modifier after collared shirt. Yes. तो भूमिका आपने पुरानी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब देख लिया. You caught up with the syllabus. इसमें प्रॉब्लम क्या है? दिस प्रॉब्लम इज कि हम केचप, हम शर्ट की बात कर रहे हैं एंड इट सीम्स कि हम वेडिंग की बात कर रहे हैं. लुकिंग एट द मॉडिफायर, तो दिस करेक्ट प्लेसमेंट इज एंगस wore his collared shirt, comma, which was stained by ketchup to the wedding. सही है? Yes, Rao, you're right. सही है? Do you guys want to do एक दो और सवाल या नहीं इसके? Okay, you guys want to do. So let's do 2 more questions. Okay. Question number 11. As I
was walking to my car. The rain began pouring from the sky, and I was drenched. क्या मसला है इसमें? देविका बताओ, what is the problem? Fatma, can you please tell? Which in that में इतना problem इतना difference नहीं होता है शकील. It depends sentence to sentence. Because which and that दोनों जो है ना mostly humans के लिए use नहीं होते. So which and that में there is no written या confirmed क्या कहते हैं difference. It usually depends on the sentence. ठीक है, दोनों use हो सकते हैं. Which और that है, दोनों are okay for every sentence. Almost every sentence. ठीक है, चलो please answer Fatma and Alian. You guys please answer जो participate नहीं कर रहे हैं. Shabir. I can see the attendances. Ma'am, I'm following. Okay, ठीक है. Can you please answer Alian question number 11? The rain पहले आएगा. अच्छा, तो you guys are saying कि it should be कि the rain began pouring from the sky and I was drenched as I was walking to my car. That's what you're saying, right? From the sky remove कर दें. क्यों remove कर दें? Because sentence के wordings को change नहीं करना, हमें सिर्फ placement को change करना. Laiba, which option you were telling? आप please type करके बता दो. Are you saying the rain began pouring from the sky as I was walking to my car and I was drenched? Okay, you're saying that. ठीक है. That is the correct option. That is right. दोनों सही हैं. The rain began pouring from the sky as I was walking to my car and I was drenched. ठीक है. Yeah, you can even say the rain began pouring from the sky and I was drenched as I was walking to my car. दोनों सही. ठीक है. As long as you're touching the modifier to the noun. ठीक है. एक और कर लेते हैं last. Eagerly waiting for the guests to arrive. Mary's cake was tempting Mary to eat it early. What's the problem in this? मुझे करेक्ट आंसर बताने से पहले बताओ प्रॉब्लम क्या है. Mary's cake, yes. Possession जो है ना वो problem है. The correct option should be eagerly waiting for the guests to arrive. Mary was tempted to eat the cake early, right? Simple, बहुत simple था ये वाला. ठीक है. अच्छा, एक last कर रहे हैं हम. Then I'll end the class. Dr. Walter's auditorium almost contained 300 guests. इसमें कोई प्रॉब्लम है? Is there any problem in this? There is a problem. Why? Because almost should be used after contained. Exactly. Because you can it doesn't make sense कि आप बोलो almost contained. You have to say contained almost 300 guests. ठीक है? Almost हमेशा नंबर से पहले आता है. उसके बीच में अगर आप contained डाल दो ना तो it does not make sense. Dr. Walter's auditorium almost contained 300 guests. ठीक है? Does not make sense. Is it clear to everyone? सबको सारे समझ आ गए? I'm ending the class now. ठीक है? I'm stopping sharing. Allah Hafiz, guys.